Good morning, dear children. In previous class, we completed vocabulary junction, listening and speaking junction, and question answers of lesson 12, creative, which is a poem Creative Minds. In today's class, we are going to start with phonic junction. So here we are going to read about words where sound of O is coming, AWEO. Okay, as in word ordinary, OR, letters OR are pronouncing sound of O. Ordinary. How we pronounce it? Ordinary. So sound of AWEO is coming. Let us read all these words. All words are pronounced in the same way. LAW, law. TAUGH, taught. BECAUSE, because. LAWN, lawn. DRAW, draw. DAUGHTER, daughter. CAUGHT, caught. FOUGHT, fought. PAUSE, pause. FAULT, fault. BROUGHT, brought. CRAWL, crawl. Okay, so as you can hear, all these words are pronounced in the same way. They all produce sound of O. Here are some few more words that have sound of UA, like tour, usual, pure, actual, mutual. So these words are pronouncing sound of UA. Beta, after watching the video, please repeat all these words. Please try to pronounce these words and practice their pronunciation. Here you have to do this question which is based on the above words. You have to read the clues and write the words in the space provided. I have done for you, but still we will read. First is past tense of teach. Past tense of teach is taught, used as a conjunction of reason. The conjunction that is used to give a reason is because. Past tense of catch is caught. Free from impurities, pure. To stop a video or audio for a moment is pause. To walk on 4 legs is crawl. Female child. Female child is called daughter. Okay, so you have to read all these words aloud after the class, after watching the video. Now come to grammar junction given on page number 181. Here we are going to learn about reflexive pronoun, but first you must know what are pronouns. Pronouns are the words that are used to replace nouns in a sentence. For example, Megha is a good girl. Here, what is a noun? Megha is a noun. And in second sentence, you will see she studies well. Here we are talking about Megha only. So we have replaced Megha noun with the pronoun she. Okay, so pronouns, example of pronouns are she, he, it, they. Yes, all these are pronouns. In this class, we are going to learn about reflexive pronouns. So what are reflexive pronouns? Pronouns that refer to the speaker or the main subject in a sentence are called reflexive pronouns. Let us take a look at the example. The girl in the poem wants to make a pair of spectacles for herself. Here we are using herself. This is a pronoun. Herself is a pronoun, and herself we are using for whom? We are using herself for girl. The girl is saying that she wants to make a pair of spectacles for herself. वो अपने लिए. Action किसके लिए हो रहा है? इस girl के लिए हो रहा है. So herself refers to the girl only. Let us take a look at other examples. Nona completed her homework herself. Nona ने अपना काम complete किया अपने आप. Herself is we have used for Nona as the work is completed by herself only. ठीक है, उसके द्वारा किया गया. Okay, the monkey ate the bananas all by itself. Monkey ने bananas खाए अपने आप. Action किसने किया? Monkey ने किया. So itself is used for monkey only. I did the homework myself. मैंने अपना काम स्वयं किया, खुद किया. So for I we have used reflexive pronoun myself. We went to the school ourselves. We का क्या हो गया? Ourself हो गया. All these are given in the place of object. So for a girl, for a female, herself. For animals and objects, itself. For I, if the I is given in the place of subject, तो उसके लिए क्या होगा? Myself object में आएगा. We अगर दिया हुआ है subject की जगह तो ourselves आएगा object में. और this is what? This is
डॉग, डॉग इज एन एनिमल, तो एनिमल के लिए क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा. द बेबी, बॉय, बॉय के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा. सो ऑल दीज आर हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउन्स रेफर टू दी नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन. ये जो नाउन्स होते हैं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ये उन नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं जो ऑलरेडी यूज किए गए हैं सेंटेंस में. ऑलरेडी नाउन या फिर प्रोनाउन, क्योंकि वी, आई, तो ये तो प्रोनाउन है ना दोनों, तो ये प्रोनाउंस होते हैं उन प्रोनाउंस के लिए यूज किए जाते हैं या नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर मेंशन किए जा चुके हैं. ओके, नाउ टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. यू हैव टू सर्कल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इट इज वेरी वेरी इजी. शी बॉट हर सेल्फ अ रिस्ट वॉच. उसने अपने लिए एक रिस्ट वॉच खरीदी. सो हेयर हर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हर सेल्फ इज यूज फॉर शी, फॉर दिस प्रोनाउन. ये प्रोनाउन पहले सेंटेंस में आ चुका है, तो इसके लिए हमने कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया, हरसेल्फ. दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर बी इज आई रोट अ मैसेज टू माई सेल्फ. आई इज अ सब्जेक्ट विच इज अ प्रोनाउन, तो इसी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज हुआ है इन दी ऑब्जेक्ट. डज द कंप्यूटर टर्न इटसेल्फ ऑफ. Does the computer turn itself off? Here we have used reflexive pronoun itself for computer. ठीक है, computer is a subject here. Okay, so computer के लिए हमने itself use किया है. So D and E part you will do yourself. These are very very easy. Now turn your page. F and G part are also given. These also you can do at home. Question number 2. We have to fill the blanks with reflexive pronouns from the box. The dog opened the kennel door by. Here subject में क्या दिया हुआ है, the dog. तो dog के लिए object में क्या लगेगा, herself, no. Myself, no. What will come, itself. B part. She decided to travel to Puri by dash. subject में क्या दिया हुआ है, she. तो यहां क्या आएगा, माई सेल्फ नो, हिमसेल्फ नो. फीमेल के लिए हर सेल्फ. सी पार्ट. आई मे डैश अ सैंडविच. आई के लिए क्या आता है, आई के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ. वेरी गुड. डी पार्ट इज हैरी फिगर्ड आउट द वे बाय. हैरी इज नेम ऑफ अ बॉय, तो बॉय के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ. E part. The family members keep. family members plural in number, तो plural in number के लिए themselves. In question number 3 you have to write the sentences with the reflexive pronouns given below. यहां पर आपको 5 reflexive pronouns दिए हुए हैं and you have to make sentences on your own. ठीक है, like himself के लिए he wrote letter to his mother. ही के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हिमसेल्फ. उसने खुद अपनी माँ को खत लिखा. ही रोट लेटर टू हिज मदर हिमसेल्फ. ओके, सो देमसेल्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट में प्लूरल नंबर होना चाहिए. आरसेल्स के लिए सब्जेक्ट में क्या आएगा, वी. वी प्रिपेयर्ड the lunch ourselves. itself किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एनिमल के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो कैसे क्या लिख सकते हैं, the parrot was eating चिलीज itself. पैरट चिलीज अपने आप खा रहा था. हर सेल्फ, हर सेल्फ किसके लिए, फीमेल के लिए. ओके, शी बॉट अ न्यू बैग फॉर हर सेल्फ. उसने अपने लिए एक नया बैग खरीदा. तो इन सब में देमसेल्स के लिए प्लूरल में आप कोई भी कर सकते हैं. दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन. So they visited to the park
themselves. वो खुद पार्क में चले गए. They visited to the park themselves. So here in all these sentences, reflexive pronouns are himself, themselves, ourselves, itself and herself. I hope all of you have understood how we did this exercise. If you do not understand anything, you can ask me. You have to do all this work in your book only. Okay? Thank you. Have a nice day.